हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के कीबोर्ड शॉर्टकट्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जिसमें 50 क्वेश्चंस है और इसके बाद भी अपन कंटिन्यू ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपन यहाँ पे अभी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। वैसे अभी मॉर्निंग में अपन 4 लेक्चर प्लस इवनिंग में 4 लेक्चर अपन ट्राई कर रहे हैं कि ये लेने का। ओके, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटर के 3 टॉपिक के ऊपर 100 एमसीक्यूज बना के रखे हैं। वो वीडियो भी आप फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि सिलेबस अगर देखा जाए तो मिनिमम 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के आएंगे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में। तो 20 मार्क्स अगर अपन ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे, 20 मार्क्स अपने को इजीली मिल जाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड अगर अपन पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा, क्योंकि मैं फुल टॉपिक कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको 20 मार्क्स जो है वो मिनिमम 20 मार्क्स आपके कवर हो जाए। ओके, मीन्स यहाँ पे अपने को क्या करना है कि जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ उसको फुल वॉच कीजिएगा, ताकि कंप्यूटर में एक भी सब्जेक्ट, मतलब कंप्यूटर ही एक सब्जेक्ट ऐसी यहाँ पे है कि अपन फुल कवर कर सकते हैं, क्योंकि एवरीवन नोन कंप्यूटर्स फंडामेंटल। ओके, तो यहाँ पे अपन सिर्फ कंप्यूटर के प्लस अभी अपन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे लेंगे, जिसके आपके और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। और मैं ट्राई करूंगा कि 4 to 8 के जो पेपर है वो मैं सेम डे यहाँ पे पोस्ट करूँ, क्योंकि मुझे मेरे कुछ कलीग कुछ फ्रेंड्स जो है वो एग्जाम ये देने वाले हैं, तो उनकी तरफ से डेटा कलेक्ट करके मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा कि आपके पेपर में कैसा ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड भी अपने को पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which shortcut key is used to undo the last action in most application? तो आंसर है कंट्रोल Z। ये सबको ही पता है, यूनिवर्सली यूज होता है undo कंट्रोल Z। ओके, नेक्स्ट, which shortcut key is used to copy the selected text or ऑब्जेक्ट? तो आंसर है कंट्रोल C। ये भी अपने को पता है, क्योंकि हर बार अपन कॉपी करने का ही काम करते हैं, तो ये तो सबसे अच्छे से अपने को पता होगा। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द कॉपीड कंटेंट? तो आंसर है उसके लिए कंट्रोल प्लस V। ओके, इट इज यूज टू पेस्ट द कॉपीड कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, which shortcut key is used to open find dialog box is most recent editor? तो आंसर इसका कंट्रोल F। कंट्रोल F is a find dialog for searching text in most application। okay, next, fifth, which keyboard shortcut is used to select all text in document? तो आंसर है उसका कंट्रोल A। ओके, देखिए कंट्रोल A select the object in the most application। ओके, नेक्स्ट, सिक्स, विच शॉर्टकट इज यूज टू सेव द करंट डॉक्यूमेंट? तो आंसर है यहाँ पे कंट्रोल प्लस S। ओके, नेक्स्ट, सेवन, विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन प्रिंट डायलॉग्स इन मोस्ट एप्लीकेशन? तो आंसर है यहाँ पे कंट्रोल प्लस P। ओके, नेक्स्ट, एट, विच शॉर्टकट इज यूज टू क्लोज द करंट विंडो ओके इन विंडोज? तो आंसर है अल्टर प्लस F4। Alt plus F4 is a standard shortcut for closing current window or application window. Okay. Next, ninth, which shortcut allows to switch between open window in Windows? तो आंसर है Alt Tab। ओके, अल्टर प्लस टैब अगर करते हैं तो स्विच करते हैं अपन दो विंडो तीन विंडो जितनी भी विंडो है उसमें। ओके, नेक्स्ट, टेंथ, विच शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग टास्क मैनेजर इन विंडो? तो आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ओके, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप डायरेक्टली ओपन टास्क मैनेजर इन विंडो। ओके, नेक्स्ट, 11th, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश द करंट वेब पेज इन ब्राउजर? तो आंसर है F5। ओके, F5 इज अ स्टैंडर्ड शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेशिंग वेब पेज इन मोस्ट वेब ब्राउजर। ओके, नेक्स्ट, 12, which shortcut key is most to open window setting menu? तो आंसर है विंडो की प्लस L। ओके, विंडो की प्लस L ओपन द सेटिंग इन विंडो। ओके, नेक्स्ट, 13, which shortcut key is used to open file explorer in window? तो आंसर है विंडो की प्लस E। ओके, इट्स ओपन द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज। ओके, नेक्स्ट, 14, which shortcut key is used to open new tab in most web browser? तो आंसर है कंट्रोल प्लस T। ओके, देखो कंट्रोल प्लस T ओपन न्यू टैब इन मोस्ट वेब ब्राउजर।
Next 15. Which shortcut is used to close the current tab in most web browser? तो आंसर है कंट्रोल प्लस W. ओके देखिए, कंट्रोल प्लस W is used to close the current tab in most web browser. Next 16. Which shortcut is used to open task in window tab? तो आंसर है विंडो प्लस की टैब. ओके, अगर टास्क व्यू अगर ओपन करना है तो उसके लिए अपन विंडो की प्लस टैब का यूज करते हैं. ओके. Next 17. Which shortcut allows you to increase the zoom in most application like browser and processor? तो आंसर है control plus plus operator. Okay. Next 18. Which shortcut is used to minimize the current window in the window? तो आंसर है window key plus M. Window key plus M minimize the current window in Windows. Okay. Next 19. Which shortcut key is used to open the run dialog box in Windows? तो आंसर है window key plus R. Window key plus R open run dialog box, allowing user to run program directly. Next 20. What is the shortcut key for duplicating file or object in most operating system? तो आंसर है control plus D. Okay, देखिए, control plus D duplicate the selected item file in operating system and application. Next 21. Which shortcut is used to open developer tool panel in web browser? तो आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई. ठीक है, इट ओपन डेवलपर टूल इन मोस्ट वेब ब्राउजर. नेक्स्ट 22. Which shortcut key is used to open context menu means right click menu in window? तो आंसर है shift plus F10. shift plus F10 अगर प्रेस करेंगे तो context menu जो होता है वो ओपन होता है. ओके. Next 23. Which shortcut is used to highlight all text in a document or field? तो आंसर है Control plus A. ठीक है, Control plus A मतलब select all the documents. Next 24. Which keyboard shortcut allows you to lock your computers in Windows? The answer है window key plus L. It's log or required password to other authentication log in back. Okay. Next 25. Which keyboard shortcut is used to start new presentation in Microsoft PowerPoint? The answer है F5. F5 start new presentation from beginning of in the Microsoft PowerPoint. Okay. Next 26. Which shortcut is used to open insert tab in Microsoft Word? तो आंसर है Alt plus N. देखिए, in Microsoft Word pressing Alt plus N open insert tab in the ribbon. Okay. Next 27. Which shortcut is used to make text bold in most text editor? तो आंसर है Control plus B. देखिए, Control plus B is used to apply bold formatting to selected text. Next 28. Which shortcut is used to uh, italicize text means indirect italic है actually italicize text in most text editor? तो आंसर है Control plus I. ओके देखिए, it italize the selected text in the most editor. Next, which shortcut key is used to underline text in most editor? तो आंसर है Control plus U. Next 30. What is the keyboard shortcut to delete a selected file or folder in Windows? तो आंसर है delete. Delete key is used to move the selected file to the recycle bin in window. Okay. Or shift plus delete is the permanently without sending it to recycle bin. Okay. Next 31. Which keyboard shortcut is used to minimize all window and showing the desktop window? The answer है window plus D. Window plus D क्या करता है? Minimize all windows, show the desktop and pressing it again restore the window. Next 32. What is the shortcut to open control panel in window? The answer है window key plus R. देखिए, window key plus R open run dialog where you can type control to open the control panel. Okay. Next 33. Which keyboard shortcut is used to switch between different tab in a web browser? The answer plus tab is used to switch between open tab in browser and control plus shift plus tab
can use to move the backward between the tab. Okay. Next, 34. Which shortcut key is open the file explorer in the file window? तो आंसर है विंडो की प्लस E. Okay. Next, 35. Which keyboard shortcut is used to create new folder in dialog? तो आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N. Okay, it is used to create a new folder in file explorer. Next, 36. What is the shortcut key to zoom out in a web browser? तो आंसर है कंट्रोल प्लस. अगर कोई भी जूम करना है ब्राउजर में तो कंट्रोल प्लस प्लस का यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट, 37. Which shortcut key is used to open task manager on window? तो आंसर है shift plus control plus escape. Okay. Next, 38. Which shortcut key is used to lock your window screen? तो आंसर है window plus L. Next, what is the shortcut key paste the clipboard to the content in Excel? तो ऑप्शन है control plus V. Next, which shortcut is used to refresh web page in Google Chrome? तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल आर भी है, F5 भी है, कंट्रोल F5 भी है, मींस ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, which shortcut key is used to open start menu in window? तो आंसर है विंडोज की. ओके. नेक्स्ट, which shortcut is used to mute or unmute audio on computer? तो आंसर है F8. F8 is a shortcut key to mute or unmute sound on many computers. Next, 43. Which shortcut is used to open developer tools in Google Chrome? तो आंसर है shift control plus shift plus I. Next, 44. What is the shortcut to open new tab in a browser? तो आंसर है control plus T. Okay. Next, 45. Which shortcut allows you to open window setting app? तो आंसर है window plus key plus I. Okay. Next, 46. Which shortcut allows you to create new email in Microsoft Outlook? तो आंसर है control plus shift plus M. Okay. Next, 47. Which shortcut is used to toggle between different language on keyboard layout on Windows? तो आंसर है Alt plus Shift. Okay, देखिए Alt plus Shift is a toggle between language keyboard layout. Okay. Next, 48. What is the shortcut to show hide ribbon in Microsoft Office application? तो आंसर है Control plus F1. Okay, देखो Control plus F1 show hide the ribbon in Microsoft Office application like Word, Excel and PowerPoint. Next, 49. Which shortcut is used to open search bar in Windows? The answer is Window key plus S. Okay. Next, 50. What is the shortcut for opening properties dialog box for selected file or folder? The answer is Alt Enter. Okay. Alt Enter open property dialog for selected file or folder in Windows. नेक्स्ट जो रहेगा वो प्रैक्टिस करेंगे अपन जीके इंग्लिश टीआर रीजनिंग की प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ओके, तब तक के लिए थैंक यू.